Now in this video, let's see the difference between MHC class 1 and MHC class 2. The first point of difference is presence. MHC class 1 will be found on all nucleated cells except sperm and platelets. So MHC class 1 is not found on the RBCs. Why? Because they are not nucleated. MHC class 1 will be present on any cell that will have nucleus except sperm. It's not present on sperm, and it's also present on platelets. MHC class 1 is present on all nucleated cells and platelets. MHC class 2 will be present on the antigen presenting cells like the dendritic cells, macrophages, and the B cells. MHC1 on all nucleated cells and MHC2 on the antigen presenting cells like dendritic cells, macrophages, and B cells. MHC class 1 will present the antigen to CD8 plus T cytotoxic T cells. So MHC1 will present the cells to CD8 या cytotoxic T cells, and MHC2 will present the antigens to CD4 या T helper cells. MHC1 to CD8 plus cytotoxic T cells and MHC class 2 to CD4 plus helper T cells. The nature of peptide antigen in case of MHC class 1, they are derived from intracellular pathogens or endogenous pathogens like viruses or tumor antigens. MHC class 2, they are derived from the extracellular antigens like bacteria, fungi, or toxins. Okay, toxins or bacteria or fungi. Okay, MHC1 are derived from the intracellular or endogenous pathogens. MHC2, the peptide antigen, is derived from the extracellular antigens. Let's see the pathway of antigen presentation. In case of MHC class 1, cytosolic pathway, which is for endogenous antigens, and endocytic pathway, which is for the exogenous antigens. Cytosolic for class 1 and endocytic for class 2. Cytosolic for class 1 and endocytic for class 2. The last point is peptide binding site. In case of MHC class 1, alpha 1, alpha 2 domain will form the peptide binding groove. And in case of MHC class 2, alpha 1 and beta 1 domain will form the peptide binding groove. Okay, class 1, alpha 1, alpha 2 groove, and MHC class 2, alpha 1, beta 1 groove. Okay. MHC class 1 will bind short peptides. MHC class 2 will bind longer peptides. What is the antigen presentation pathway in case of MHC class 1? It is cytosolic pathway. Cytosolic pathway is for the endogenous or intracellular antigens like viral proteins or tumor antigen. Cytosolic pathway is for the endogenous or intracellular antigens like the viral proteins और ट्यूमर एंटीजेंस. ये जो इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स हैं जैसे कि वायरल प्रोटीन हो गए, दे विल बी डिग्रेडेड बाय प्रोटियोसोम इनटू पेप्टाइड फ्रेगमेंट. उसके बाद वो जो पेप्टाइड होगा दे विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाया द टैप. टैप स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड एंटीजन प्रोसेसिंग. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो जो पेप्टाइड्स है दे विल बाइंड टू द ग्रूव विच इज फॉर्म्ड बाय अल्फा 1 एंड अल्फा 2 डोमेन ऑफ MHC1. ठीक है, तो पहले ये जो इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स है
उनका डिग्रेडेशन होगा, फिर वो ER में आएंगे, ER में आके वो alpha 1 alpha 2 groove of the MHC 1 they will bind to that groove. उसके बाद ये जो MHC 1 और पेप्टाइड का कॉम्प्लेक्स है, दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द सेल सरफेस and then it is presented to the CD8 plus T cells. Endocytic pathway जो होता है in case of MHC class 2, it is to present the exogenous antigens, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरियल प्रोटीन्स हो गए, ठीक है. इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंटीजन है दैट इज टेकन अप बाय एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस, ठीक है. जो भी बैक्टीरियल प्रोटीन्स हैं उनका एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस होता है, फिर दे आर डिग्रेडेड इनटू पेप्टाइड्स विद इन द एसिडिक एंडोसोम या लाइसोसोम. MHC क्लास 2 और पेप्टाइड का जो कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द CD4 प्लस T सेल्स, ठीक है. MHC 1 में जो पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव है दैट इज फॉर्म्ड बाय द alpha 1 alpha 2 डोमेन. MHC क्लास 2 में इट इज फॉर्म्ड बाय द alpha 1 एंड बीटा 1 डोमेन, ठीक है. इस केस में alpha 1 alpha 2, इसमें alpha 1 beta 1. So that was the difference between MHC class 1 and MHC class 2.